Hello everyone. Today we are going to start the subject Discrete Time Signal Processing, DTSP. This subject, DTSP subject, is in the 5th semester of Mumbai University. If you see this subject, discrete name suggests that discrete time signal processing. मतलब हमें प्रोसेसिंग करना है कौन से सिग्नल का, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का प्रोसेसिंग करना है. So you are going to learn how to process the discrete time signals in these subjects. Okay. Basically, why we have to process the discrete signal? So discrete signals, there is need to process the discrete signals because sometimes we have to analyze what is the content of these discrete time signals. Okay. So for analysis of DT signals, we do the processing. At the same time, if you want to modify the DT signals, we'll do the processing. Okay. So discrete time signal processing is the process of analyzing and modifying a DT signal. Why we have to modify the DT signal? To optimize or to improve its efficiency or performance. Okay. So जो discrete time signal हम लोगों ने सेंसर थ्रू हम लोग कैप्चर करते हैं, बेसिकली विल कैप्चर द एनालॉग सिग्नल्स थ्रू अ सेंसर. ओके. But this way, during capturing process, this analog signals contaminated with the noise, distortion. Okay. So there is need to separate out the informations from this noise contaminated analog signals. So what we are doing is that this analog signal first of all converted into discrete signal, and then the discrete signals will be converted into digital signal. And this digital signal is processed by the DSP processor. Okay. DSP processor. And this output of DSP processor is an improved digital signal or improved DT signal. If it is a DTSP processor, then it is a improved DT signals like this. And therefore, discrete time signal processing is a process of analyzing and modifying a DT signal, okay, to optimize or to improve its performance or to improve its efficiency. Okay. Basically discrete time signals को analysis क्यों कर रहे हैं हम लोग? Because sometimes we know whether this DT signal is periodic or non-periodic. Okay. If you want to do the scaling of this discrete signals, then there is need to analyze the discrete time signals. Sometimes we have to detect the number of frequency component contained in these discrete signals. Okay, for this purpose we'll do the analysis. Okay, how much is the noise contained in these DT signals, how much is the information contained in these signals. ये सब अगर हमें पता करना है तो हम लोग एनालिसिस करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का. ओके. एंड मॉडिफाइंग करना मतलब क्या? सिग्नल्स को मॉडिफाई करना डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को मतलब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को मॉडिफाई करना मतलब रिमूविंग नॉइस यूजिंग फिल्टरिंग प्रोसेस. सो DSP प्रोसेसर में फिल्टर्स रहेगा. दिस फिल्टर में बी द हार्डवेयर पार्ट ऑफ दिस DSP प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर पार्ट. Most probably it is a software part, it is algorithm or it is a program which will be written in this DSP processor to perform the filtering action. Okay. So this DT signals contaminated noise, so that noise can be removed by using the filter. So filter का जो program है ये DT signal पे अगर हम लोग apply करते हैं, okay, तो what happen, noise will be removed and you are getting here the improved DT signals like this. Okay, sometimes there is need to detect the errors in these discrete time signals. Sometimes there is need to compress the discrete time signals. Okay, sometimes we have to do the signal recognition. Okay, so ये सब करने के लिए हम लोग this is we call the modification of the DT signal. So DSP processor can analyze the DT signal or can process this or can modify the DT signal and produce the improved discrete time signals. Okay, so this is basically like this. Now first of all we are going to see in short what is the signal and then DT signals and then digital signals कैसा बनता है वो देखेंगे. Get it? So how to define signals? So signals is any physical quantity which varies with respect to
independent variable like time, space. Okay, isn't it? So signal is nothing but any physical quantity like temperature, pressure, which is varies with respect to time or space or any other independent variable. Okay, isn't it? So signals are classified into two types, analog signals and digital signals. Again, analog signals दो type के होते हैं. One will be the continuous time analog signals and discrete time analog signals. So जो continuous time analog signals है, that is we call the CT signal. Okay, and discrete time analog signals को DT signals बोलते जाएंगे हम लोग हमेशा. Okay, now how will you obtain discrete time signals? So discrete time signals is obtained by sampling the continuous time analog signals at regular interval of time. And this regular interval of time we call the sampling period, and it is represented by Ts. Okay, and how much is the samples? Okay, how much is the samples per second? We call the sampling frequency, and that is represented by Fs, which is equal to 1 by Ts. Okay, now let us see. This is basically the sampling process. Okay, so this is a continuous analog signal, triangular pulses. Okay, so this is a periodic triangular pulses, and it is a analog signal. So this is a continuous time signals. Now if you sample these analog signals at regular interval of time, then this continuous time signals will be converted into discrete time signals. सैम्पल करना मतलब क्या कि ये इंस्टेंस को मैंने ऑब्जर्व किया, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस एनालॉग सिग्नल, वी फाउंड दैट इट इज 0. ओके, एट दिस इंस्टेंस विल ऑब्जर्व हाउ मच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एनालॉग सिग्नल, सो वी फाउंड दैट इतना उसका एम्पलीट्यूड है, दिस मच इज द एम्पलीट्यूड. ओके, देन t इक्वल टू 2 सेकेंड्स को ऑब्जर्व किया कितना एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया. t इक्वल टू 3 को और बढ़ गया, t इक्वल टू 4 को और बढ़ गया, लाइक दिस. t इक्वल टू 5 को एम्पलीट्यूड वी आर गेटिंग मैक्सिमम. तो ऐसा एवरी इंस्टेंस को, टाइम इंस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, विल ऑब्जर्व दी व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस एनालॉग सिग्नल्स. ओके, एंड दिस इज वी कॉल्ड द सैम्पलिंग प्रोसेस. सो सैम्पलिंग करना मतलब क्या है आप लोगों को, ये जो एनालॉग सिग्नल है, सपोज उसका अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास है, इसको इस सीटी सिग्नल्स को डीटी सिग्नल्स का एक्सप्रेशन आपको ऑब्टेन करना है, तो क्या करेंगे हम लोग कि ये जो एनालॉग सिग्नल्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस रहेगा उसमें t इज रिप्लेस बाय NTS. सो व्हेन यू पुट t इज इक्वल टू NTS मींस यू आर डूइंग द सैम्पलिंग. ओके, यू आर डूइंग द सैम्पलिंग. ओके, सो ये एनालॉग सिग्नल है, उसको हम लोगों ने सैम्पलिंग किया, मतलब t इज रिप्लेस बाय NTS. सो हियर x ऑफ t है, व्हेन इट इज रिप्लेस बाय NTS इट विल बिकम x ऑफ NTS. दिस t इज विल बिकम रिप्लेस बाय NTS. ओके, so this is a 1 TS, this is 2 TS, this is 3 TS, 4 TS, 5 TS, 6 TS, like this, and in general it is NTS. Okay, so this is we call the discrete signals. Okay, this is we call the discrete signals. Now these discrete signals, okay, will be given to the quantizer. अगर हम लोगों को discrete signals का digital signals में convert करना है, तो discrete signals, digital signals will be obtained by quantizing and encoding the discrete time signals. Okay, तो ये discrete time signal है, इसको पहले हम लोग quantizer से पास करेंगे. Quantizer what it is, it will basically, in short it is a rounding up process. Okay, जैसा कि at t equal to 1 instance ये signals का amplitude है 1.24. Okay, so if it is in between 0.5 to 1.5 it will be round off to 1. 0.5 1 क्वांटाइजेशन लेवल है, 1.5 को एक क्वांटाइजेशन लेवल है. लेट अस से दैट 2.5 को दूसरा तीसरा क्वांटाइजेशन लेवल, चौथा विल बी 3.5 को एक क्वांटाइजेशन लेवल है. सो इफ द सिग्नल्स वैल्यू इज इन बिटवीन 0.5 टू 1.5, ओके, इट विल बी राउंड ऑफ टू 1. इफ द सिग्नल वैल्यू इज इन बिटवीन 1.5 टू 2.5 इट विल बी राउंड ऑफ टू 2. 2.5 से 3.5 के बीच में क्वांटाइजेशन लेवल के बीच में रहेगा, तो इट विल राउंड ऑफ टू 3, लाइक दिस. So now it is at t equal to 1, signal having the value 1.24 and it is in between 0.5 to 1.5 and therefore it is round off to 1. Then this is round off to 2 because it is in between 1.5 to 2.5 and therefore it is round off to 2. This is in between 3.5 to 4.5. Okay, so therefore this is round off to 4. Okay,
So like this we can round off the signals. So this is closer to 4, so we'll round off to 4. This is we select closer to 2, so we'll round off to 2. Okay, so 1.5 के नीचे रहेगा तो 1 को राउंड ऑफ करेंगे, 1.5 के ऊपर जा रहा है तो उसको 2 को राउंड आउट करेंगे. लाइक दिस इज ओके इन शॉर्ट. Isn't it 4.78 है, this is closer to 5, so it is round off to 5. 6.25, it is closer to 6, not 7, and therefore it is round off to 6. Okay, so this is we call the quantization process. Okay, so therefore this is a we say quantized discrete time signals. Still it is discrete time signals, it is quantized discrete time signals. Okay, ऐसा दोनों यहाँ और एक रहा यहाँ पे रहेगा जो कि मैं निकालना भूल गया है. ओके, एंड देन दिस quantizations का जो output है, it will be given to the encoder. Encoder will convert this each sample. Now this each vertical line we call as a sample. Okay, so each samples will be converted into the binary bits, equivalent binary bits. So 1 है तो it will be represented by 0 0 0. ना इसमें हाईएस्ट एम्पलीट्यूड कितना है 6 है, लोएस्ट एम्पलीट्यूड 0. तो 0 to 6 रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट लगेगा, 2 बिट लगेगा क्या, 3 बिट लगेगा, 4 बिट लगेगा. You require only the 3 bit, and therefore 1 will be represented by 0 0 0, 2 will be represented by 0 1 0, 4 will be represented 1 0 0 like this. Okay, and then ये इस टाइप का आपका डिजिटल सिग्नल्स पास होता है. दिस इज वी कॉल द डिजिटल सिग्नल्स. करस्पॉन्ड्स टू 1 पल जाएगा, करस्पॉन्ड्स टू 0 कुछ नहीं जाएगा. And this is a digital signals. So this analog signals gets converted into digital signals like this. Okay, so therefore continuous time signal we call the analog signal. जब हम लोग उसको सैम्पलिंग करते हैं तो विल कन्वर्ट दिस एनालॉग सिग्नल्स इनटू द डिस्क्रीट सिग्नल्स. डिस्क्रीट सिग्नल्स को हम लोग जब क्वांटाइजेशन एंड एनकोडिंग करते हैं तो दैट डिस्क्रीट सिग्नल्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स. Isn't it like this? Okay, and therefore that will be represented. This is a basic block diagram of DSP system. कोई भी DSP सिस्टम में आप लोगों को कम से कम इतना ब्लॉक तो दिखेगा ही. ओके, पहला ब्लॉक कौन सा है तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट. ओके, देन ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, देन DSP प्रोसेसर, देन DAC डिजिटल टू एनालॉग कंट्रोलर converter, sorry, digital to analog converter, and then this is a low pass filter. Okay, so continuous time signals will be given to the sample and hold circuit. This sample and hold circuit perform the sampling process. Okay, this perform the sampling process. So CT signals gets converted to DT signals using the sample and hold circuit. Then the DT signals will be given as an input to the ADC, okay, which is analog to digital converter. इसमें अभी आप लोग का रहेगा क्वांटाइजर एंड एनकोडिंग. ऐसा दो सर्किट रहेगा. वन विल बी क्वांटाइजर एंड एनकोडिंग. सो दिस डीटी सिग्नल अगर इसको इनपुट देते हैं तो आउटपुट में आपको मिलेगा डिजिटल सिग्नल. दिस डिजिटल सिग्नल्स विल बी गिवन टू द प्रोसेसर. ये प्रोसेसर ये डिजिटल सिग्नल्स को मॉडिफाई करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट. फिल्टरिंग करना रहेगा तो फिल्टरिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेगा. कॉम्प्रेस करना रहेगा तो कॉम्प्रेशन का एल्गोरिथम अप्लाई करेगा. ओके, नाउ देन अगर आपको स्पीच एनी रिकॉग्नाइजेशन करना है, स्पीच या सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन करना है तो रिकॉग्नाइजेशन का एल्गोरिथम रहेगा, वो उस पे अप्लाई करेगा लाइक दिस. ओके, सो डीएसपी प्रोसेसर प्रोसेस दिस डिजिटल सिग्नल एज पर द रिक्वायरमेंट, एंड आफ्टर आउटपुट ऑफ डीएसपी प्रोसेसर इज वी कॉल द प्रोसेस डिजिटल सिग्नल और इंप्रूव्ड डिजिटल सिग्नल. Okay, which will be given to again D to A converter. So the digital signal exactly opposite processor. Digital signals again converted into analog discrete signal, and then discrete signals से हम लोग continuous time signals का reconstruct करते हैं by using this low pass filter. Okay, तो low pass filter reconstruct this analog signals from the discrete time signal. Okay, this is basically every DSP system consists of at least इतना part तो रहेगा ही. Okay, and here this CT signal is हम लोग sensor through obtain करते हैं. Okay, using sensors will sense this continuous time signals and it is given ये process को दिया जाएगा as a input दिया जाएगा. Is it like this? Okay, then next what we are going to see is what are the basics analog signals, sorry basics DT signal. कौन कौन सा basic DT signals है? तो पहला है discrete impulse signals. इम्पल्स सिग्नल्स इज नथिंग बट एक ही सैंपल रहेगा एट एन इक्वल टू 0 को जिसका एम्पलीट्यूड 1 रहेगा. सो इट इज जस्ट अ सिंगल सैंपल एग्जिस्ट एट एन इक्वल टू 0 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. डेल एन हैज वैल्यू 1 ओनली फॉर एन इक्वल टू 0, अदरवाइज इट इज 0. देन डिस्क्रीट यूनिट स्टेप सिग्नल. यूनिट स्टेप सिग्नल्स हैज द
number of samples of unit amplitude at n greater than equal to 0. So u of n has value 1 for n greater than equal to 0, otherwise it is 0 and it will be represented like this. n greater than 0 के लिए जो samples रहेगा और सब samples का value 1 1 रहेगा. This will be extended to infinity. Okay. Now discrete sinusoidal हम लोग ऑब्टेन करना है तो continuous sinusoidal से हम लोग ऑब्टेन करते हैं sampling करके. So let us say that this is a continuous sinusoidal. X of t is equal to cos of omega t, or we say that ohm t, where this ohm is equal to 2 pi f, and this is we call the angular frequency. Okay, this is a unit will be radian per second, where f is a linear frequency whose units will be hertz. This is a continuous time signals का angular frequency and linear frequency. अभी dt signal is obtained by sampling the ct signal at regular interval of time. Okay, मतलब हम लोगों t equal to nts put करना है ये mathematical expression में, and therefore x of n is equal to x of t by putting t equal to nts. So x of t is a continuous signal, उस पर से हमें discrete signal मिलेगा अगर हम लोग x of t में t is equal to nts पुट करते और t is equal to n upon fs पुट करते. तो ये t जो है उसको हम लोगों ने n upon fs पुट किया, ओम जो है 2 pi f है, and therefore it will be like this 2 pi f upon fsn, that is the cos of omega fn, capital Fn, okay, and which is equal to cos of omega n, where omega is equal to 2 pi into capital F, and this is we call a digital angular frequency. Okay, अभी ये digital signal, discrete signal का digital signals आ गया, and उसका angular frequency है, that is unit will be radian only, and this capital F we call as a digital frequency. कैपिटल एफ कैसा मिला आप लोगों, तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ अपॉन एफ एस. सो कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ अपॉन एफ एस, वेयर दिस स्मॉल एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालॉग सिग्नल, एफ एस इज अ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी. सो देयरफॉर हाउ विल डिफाइन दिस डिजिटल फ्रीक्वेंसी? डिजिटल फ्रीक्वेंसी इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ एनालॉग फ्रीक्वेंसी टू द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी. ओके, ऐसा हम लोग उसको डिफाइन करते हैं. And this digital frequency is repetitive in nature for periodic signals. Okay, it will be repeated after 2 pi. Okay, and therefore the range of omega we said is minus pi to plus pi, like this. So this is a range of digital frequency, angular frequency, from minus pi to plus pi. Thank you.